ओके, सो अपना फाटक रेपर्टरी लवर जो ग्रुप है उसमें हम लोगों ने एक ओपिनियन पोल डाला था जिसमें लिखा था कि एलएम पोटेंसी आप यूज करते हो या सीखना चाहते हो कैसे यूज करना है, और यू डोंट बिलीव इन एलएम पोटेंसी. So I was not actually surprised to see answer by one of the participant who has voted that he don't believe in LM potency. So I don't know whether he has pushed that button accidentally of that vote or he has casted deliberately. But there was always a conflict, or there were some peoples or the doctors around the world who are still today are not agreeing with the sixth edition of Organon of Medicine. Okay, so it depends on if you believe in sixth edition of organ, then and then you can believe on believe in LM potencies. Some people are having a misunderstanding that it may not be written by Dr. Hahnemann himself, but there are proofs that Dr. Hahnemann had written some letters to the stalwarts of that time, and they were using this LM potency, and they were knowing that thing at that time also. So there is no question, in my opinion, about doubting this LM potency or sixth edition, whether or not it is written by Dr. Hahnemann. So we'll move towards the next topic. So why did Dr. Hahnemann have failed to research this LM scale? Can anybody tell me? Sir, please To pardon. avoid aggravation, sir, medicinal aggravation. Very good, ma'am. So right answer. Again, what may be, what may be the more reasons? For long use, sentiment scale potency, but long time after cure, not short time cure. Okay, means you want to say, sir, that he was trying to cut short the period of treatment, right? No? Yes, sir. Okay, okay, right. जो सेंसिटिव पेशेंट होते थे उनके लिए भी ये किया गया था, जो ओवर Very good. सेंसिटिव पेशेंट थे. तो सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव और वेरी वीक पेशेंट्स, तो उनमें क्या होता था कि वी आर यूजिंग सेंटिसिमल स्केल, यूजुअली द पेशेंट गॉट severe aggravation, and the aggravation was there for a prolonged period, and you need to antidote that with some other medicines. So it was a necessity of time. What more can be there? Sir, in some skin diseases where there was many times relapse or there is aggravation from this potencies, na? So in that cases, regular basis पे जैसे कि rheumatoid arthritis or any other this autoimmune diseases, regular basis पे आपको stimulation देना पड़ता है. In that you can't give this potency form. There would be aggravation sometimes. So for regular basis, in a very this Okay, so you want to negligible. so in short, you want to say that in chronic diseases, Dr. Hahnemann thought that the period of treatment should get shortened, and that's why he invented LM scale. Okay, this is Yes, what sir. you want to say, na? Okay, okay, okay. This is Sir, also a right answer, but this Sir, potency not only works in chronic cases, but it works in acute cases also. Anyone wants to add some point regarding Sir, this? sir, to minimize the duration of Okay, cure. that already we talked about, sir. Anyone This apart potency from that? can be frequently repeated, sir. Yes, ma'am. Okay. What more? I will just give you a Sir, hint. during please. treatment, to avoid the aggravation. That also we already talked, sir. Okay, sir. Okay. What more? May I, I'm sir? giving you a hint. Just consider organon of medicine, first 2-3 aphorism, and the necessity of LM. Use remedy. May I ask? Pathological cases में Who is saying, may I ask you? Please talk. Typical. Please, ma'am. So the homeopathic aggravation in LM scale occurs during the end of the treatment.
Okay, that will be next topic, ma'am. We are just now talking why Dr. Hahnemann Dr. Hahnemann needed to invent this potency. That's what we are talking about. It So, acts fast. Rapid, very gentle, and good. permanent Very good, restoration very good. of health. Yes, yes. So rapid. So what was happening with the centesimal scale? The treatment, the results or cure was not that much rapid, but we can cut short the time by 1/3, 2/3, or up to half, especially in chronic diseases after using LM scale. So if you read cases of Dr. Kent, no, so many of the chronic cases you will see that they were following Dr. Kent from the average 2 years to 6 years to get cured. So this was the need of time that the cure was not rapid in chronic cases. So it was not fulfilling the object of that aphorism. Second thing, due to homeopathic aggravation, the cure was also not the gentle, as the patient was suffering more with the centesimal scale. Then the gentle, rapid, and Permanent, sir, permanent. Permanent. Permanent was also there. Permanent was also there, but these two things were not satisfied with centesimal scale. So I will skip the topic. How Hahnemann got the idea to invent LM scale. We will directly proceed to that. So Dr. Hahnemann had worked for around from 1838 to 1842 for around 5 years to discover and practice LM potency. When he practiced this potency, he has prepared himself, he has given to his patient, he studied the results, and then he developed the scales. So if you want to repeat the potency in centesimal scale, so we were having they were having very less options. Means the gap was very huge. Means on that time, the Dr. Hahnemann or the stalwarts are preparing medicines by their own. When the professionally manufacturing companies are preparing, then there was huge gap from 30, then you can have 200 directly. But Dr. Hahnemann or the Dr. Kent Boningusen sir, they were preparing their medicine by their own. So the gap was not that much, but it was still high at that time. So the chances of jumping from 30 to 200 or 30 to 35 or 30 to 50 C potency, that was a huge gap. So what was happening? If the patient was sensitive, he was responding more to the higher potencies at that time. So this was the problem with centesimal scale. So we have two editions of Organon. Unfortunately, when I was passed out in 2002, at that time, our college or in Maharashtra, the curriculum was following fifth edition of Organon of Medicine, and there was Dr. Hahnemann didn't written anything about LM scale in that edition. But if you read the book Organon of Medicine by Samuel Hahnemann, and the book is translated by Ari Dudgeon and William Borick. The book is having both editions, fifth and sixth, comparatively in one book. If you see that edition, then you can know what was the changes from fifth to sixth edition. So aphorisms related to centesimal scale and decimal scales were completely dropped in sixth edition, and newly addition of aphorisms for LM scale preparation, how to dispense to the patient, and how to follow up in that case. It was written in sixth edition. So if we think on the line why we are using centesimal scale till date, it's a maximum use scale in India or abroad also because the lack of knowledge of sixth edition, what Dr. Hahnemann had written in sixth edition, and the remedies of LM scale are not easily available with everyone at the smaller spaces. And the awareness about sixth edition was means I can say that in last 5 years or 6 years, the awareness about using LM potency has been increased vast. Then there is one reason that pharma companies will not get benefited that much after selling these LM scales, because if you buy a 10 gram global vial from the pharmacy, I think that
the 0/1, that small file you can use for the whole lifetime of your period. So you are not going to buy it again. If you if you buy at one time. So this was again one of the causes why LM scale was behind the, it was not popular in so what I can say that Hahnemann has written a word that in fifth edition Hahnemann states our homeopathic system has advanced so near to perfection. It was near to perfection what Dr. Hahnemann writes in fifth edition. But if you see in sixth edition, Dr. Hahnemann writes that uh, in sixth edition, I have now, after 18 months of work, means after 18 months of his research and uses of LM scale, finished sixth edition of my organon, then he writes the most perfect of all. So what we should learn from this, that we should follow the sixth edition to practice in our now we have to follow the sixth edition, not to rely on fifth edition. So I will ask you one question that Dr. Kent's 12 observations. If we are giving some remedy in centesimal scale and the patient came for to follow, then we are using the Kent's 12 observation. So my question to all of you that is it obsolete if you are using LM scale, or it can be applied after LM scale also? Oh, sorry, sir. Could not understand your question. Okay. If we are using LM scale to a patient, the patient is coming to your OPD for follow-up, then you need to see what is the progress in the patient or aggravation is there in the patient. And Dr. Kent had already written his 12 observation for follow-ups, right? So can we apply those 12 observations after giving remedy in LM scale to the patient? We should, Yes, sir. I think we can apply. Okay. I No, think sir. not. No, sir. Okay. No, sir, because the No. sixth edition was published after the death of Dr. Kent. Okay, that But, cannot sir, be we the can. reason, ma'am. That this edition is printed after that. But what we can say, Doctor, I don't know, Dr. Kent was using LM potency or not. But here, what we see, when you are giving, see, CM स्केल देने के बाद में पेशेंट को होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता था, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए एलएम स्केल इंट्रोड्यूस किया. दिस इज वन ऑफ द रीजन, राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes. ओके. तो अभी अगर एग्रेवेशन केंट का अगर आप एक 12 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो डॉक्टर केंट राइट्स ओवर देयर दैट पेशेंट को जो भी तकलीफ थी, तो सीएम सेंटिसिमल स्केल में मेडिसिन देने के बाद में पेशेंट की तकलीफ बड़ी हुई रहेगी, तो आपने क्या करना है? और एलएम स्केल में क्या होता है कि एलएम स्केल में एग्रीवेशन होता ही नहीं है 99.99% केसेस में. कहाँ पे होता है मैं आपको बाद में बोलूंगा. सो इज इट एप्लीकेबल ओवर देयर? No, sir. ओके. No, sir. सो केंट के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो ऑब्सोलेट हो सकते हैं. ये मेरी खुद की सोच है, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है और मैंने कहीं रिसर्च भी नहीं किया है कि डॉक्टर केंट और यूजिंग एलएम स्केल और नॉट. ओके, we'll move forward now. So Could I add, Dr. Bagal? please sir, please sir. With the experience of the cancer cases for long times, maybe about 20 years, this we came, I'm talking about the team also where I was under Dr. Spinelli. Okay. Using in cancer cases, we call, certainly it is LM, but we call it Q also in other terms. Yes of sir, I investment. will come to that point. Yeah, it's not concerned that the response I'm going to give you ask for that. As far as the maximum cure is done by LM to reduce the daily doses, it is possible to turn back to Sentinel.
That I in will case. answer. I will answer those queries in last session, sir. All right. All Huh? right. Okay. So, as homeopathy is a revolution in the field of medicine, what Dr. Borik says about LM potency, I am quoting that. As a homeopathy is a revolution in the field of medicine, so is the sixth edition of organon in the field of homeopathy. So I can say that Dr. Borik was using LM scale at that time. So what he wants to highlight over there, that is the method of succussion, okay, or dilution or 50 millisiemens scale, to which Hahnemann term as, what did Dr. Hahnemann term this method? He termed as new altered into bracket change but perfect method. So Dr. Hahnemann himself has absoluted centesimal scale in this sixth edition. Okay. Also, Dr. Hahnemann calls this method as new dynamization method. So preparation of medicine was different in centesimal and in LM scale also. Okay. Many of us don't follow sixth edition. I am also the part of that crowd who is not following actually the each and every word or aphorism of sixth edition, but I try to follow it maximum in my practice. So many of are not following this more more in their practice. So before freedom before freedom, when Bangladesh, Pakistan, and India was the one country, at that time Dr. Harimohan Chaudhary was there, and he and one of his colleague, both of them had prepared this potency in their pharmacy, in their company, long back. I can say around 1942 or 1938, something like that. And Dr. Harimohan Chaudhary was the first person to whom I know that he has used LM scale in India for maximum period of his life. He has used LM scale up to 20 years of his life with good results in acutes and also chronics. So he has also written one book on 50 millisiemens scale or 50 M potency, where he has quoted some references of organon, of stalwarts, and also he had mentioned some cases. It is actually a small book, I think of 150 pages or like that only. If you want, you can order and read that book. So I have been using medicine only of this scale. Name What of Dr. book? Name of book, I will post that photograph after session in our group, sir. So what Dr. Harimohan Chaudhary has written in his book, I will quote his sentence. In my 30 years of practice, I have been using medicine only of this scale. He was not using centesimal. Since last 20 years, according to directives given by Hahnemann, with very satisfactory results in the rapid and gentle ideal cure of both acute and chronics. So यहाँ पे सब आ गए कि Dr. Harimohan Chaudhary was the first person to bring this potency in undivided India at that time. और तब जो प्रॉब्लम थे, तब ये सारा काम जो था, मतलब ये सारा तामझाम जो था कि सिक्स एडिशन का ब्लूप्रिंट या जो भी था, that was in the custody of a big pharma group, which is the biggest pharma company in the world in today's day also, and it was at that time also. Okay, so we'll move to the next part of LM scale. So as our topic is about how to dispense LM scale, I will stick to that. I will don't go today in deeper things like how the potency is prepared or that. I will just say you that the mother potency, I think in last session or somewhere where I have mentioned that some people are calling, some doctors are calling the 0/1 as a mother potency, but the mother potency means from which the LM potency is derived is the 3C potency. I will just put that thing. So this LM potency is called as LM, that is long form we can quote. It is also, we can say, criticized by some of the doctors. So L stands for 5 and M stands for 1000. So it comes to 50,000. So that is in Roman. This potency is also called as
50 potency, and it is also called as Q potency. So results are not only dependent, what I can say that results are not only dependent on the right simillimum, what you are selecting after your case taking, but right potency application at the right time with the right repetitions to your cases. सो आपने एक अच्छी सारी केस ले ली, आपने अच्छे रूब्रिक ले लिए, आपने अच्छी रेपर्टरी ले ली, आपने रेमेडिका में जाके पढ़ लिया, आपका रेमेडी आया कि पेशेंट को आर्सेनिक देना है, बट लेकिन आर्सेनिक का अगर पोटेंसी, इफ यू आर नॉट चूजिंग द राइट वन पोटेंसी विद द राइट रिपीटेशन, देन भूल जाओ कि अच्छी रेमेडी भी पेशेंट में कुछ काम करने वाली है। ओके, वापिस मेडिसिन देने का तरीका जो होता है कि फॉर दिस वेबिनार many of doctors have registered their name across the country, so it has increased my responsibility to study this subject very deeply and describe as per my understanding with the what we can say कि मतलब मुझे पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी का ये है कि इसलिए मैंने पूरी तरीके से स्टडी करके आपके सामने मैं बैठा हूँ। कुछ गलती रह गई मेरे से तो प्लीज मेरे ध्यान में ला के देना। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स ऑल्सो। सो Hahnemann mentions about 50 potency in 270 number aphorism in 6th edition. So there he writes about the base, what we called as a mother potency is prepared from 3C. If anyone have that book, 6th edition, they can confirm under aphorism 270. So the aphorism 248 of 6th edition of footnote of that. So what Dr. Hahnemann writes over there, the potency is made in 40, 30, 20, 15. So he has written in reverse order. Generally what we talk 15, 20, 30, 40. But Dr. Hahnemann written in 40, 30, 20, 50 posens or 8 tablespoon of water with addition of some alcohol or piece of charcoal in order to preserve it. That is quantity of water is there is quantity of water is not fixed. अभी ये सारा छोड़ दो, आई विल मतलब हैनेमन सर ने क्या लिखा है मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो मेरे पास में ना आई हैव सेंट जॉर्जेस का एलएम पोटेंसी है मेरे लिए, मेरे पास में अरेलिया रेसिमोडा 0/1। ओके, तो अभी 30 ग्राम का आता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10, 20, 25, 30 ग्राम्स। सो डॉक्टर हैनेमन राइट्स ओवर देयर poppy seed size globule which is number 10. So number 10 globule you will get of LM potency to my knowledge only with Hahnemann Homeopathic Pharmacy which is in Kolkata. So what other people are doing, they are using the plus sizes of 10. Okay, so I am just pouring this globule in a transparent bottle so that you can see the size of them. So this is the size of globules. Okay, these are readily prepared. This is 0/1. So what we need to do, we need to take a bottle. This is a 100 ml bottle. What Dr. Hahnemann says over there that you have to take 120 ml water in this bottle. But Dr. Hahnemann also tells that कि बॉटल जो है वो 3/4 तक भरा होना चाहिए। तो यू नीड टू टेक बॉटल ऑफ 160 ml। तो 160 ml का बॉटल जब आप लोगे तो उसको 3/4 तक भरना है, जिसमें 120 ml पानी जाएगा। आपने पहले बॉटल में पानी डालना है। पानी डालने के बाद में आप क्या करेंगे, आप इसको कंसिडर करिए कि ये 160 ml का बॉटल है। ये ट्रांसपेरेंट मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। डॉक्टर हैनेमन सर ने लिखा है वहां पे कि ये जो बॉटल आप तैयार कर रहे हो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट और सन रेज। तो अंबर कलर ग्लास बॉटल इज व्हाट डॉक्टर हैनेमन एडवाइसेस अस टू यूज। तो अभी आप इसको 160 ml का बॉटल समझिए, इसमें मैंने ये पानी डाल दिया। यू कैन सी इट क्लियरली नो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir, very clear. सो ये So बॉटल is this 160 ml का समझिए, मैंने सर मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, लेट मी फिनिश दिस प्लीज। ये बॉटल हम लोगों ने भर दिया, अभी ये बॉटल के अंदर मैंने क्या करना है, आई विल जस्ट टेक वन पॉपी सीड साइज ग्लोब्यूल, ओनली वन। हाँ, कभी कभी मैं वन, और कुछ जगह पे डॉक्टर हैनेमन ने 2 भी लिखा हुआ है, जब हम LM2 या LM3 देते हैं तब लिखा हुआ है। सो आई यूजुअली गो फॉर 1 और 2। डॉक्टर हैनेमन एडवाइसेस 1 और 2। तो मैं भी ये 2 महीने लिए, ये तो शायद दिखेगा नहीं आपको, ये 2 महीने डाल दिए अभी इसमें, राइट। अभी डालने के बाद में क्या करना है, मैंने डॉक्टर हैनेमन ने लिखा है कि आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के लिए इंडिया में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके झमेले बहुत होते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि सैक्लैक जो आता है अपना लिक्विड में, तो लिक्विड के मैं कुछ ड्रॉप डालता हूँ। डॉक्टर हैनेमन सर ने 5 to 7 ड्रॉप लिखा हुआ है, मैं यूज करता हूँ 5 या 10 ड्रॉप। अगर बच्चा है या कोई सेंसिटिव पेशेंट है जिसको अल्कोहल की स्मेल की वजह से तकलीफ होती होगी, तो आई विल अवॉइड टू पुट मोर ड्रॉप्स। सो हम लोगों ने पानी ले लिया 3/4, तो उसमें 2 डाल दिए, 2 पॉपी सीड साइज ग्लोबिल डाल दिए। उसके बाद में मैं ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स ऑफ सैक्लैक लिक्विड। इसके बाद में मैंने करना है ये बॉटल को बंद। अभी फर्स्ट डोज जब जब भी आपको पेशेंट को देना होता है, तो क्या करना है कि इसको डिजॉल्व होने तक के हिलाते रहना है, क्लॉकवाइज। ओके, जेंटली हिलाना है। अभी हिला दिया, हिलाने के बाद में फर्स्ट डोज के लिए आपको स्ट्रोक देने का जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गिव सकशंस टू फॉर फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज आप डायरेक्टली दे सकते हैं। मान लो हमको सेकेंड डोज पेशेंट को देना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, आपको बॉटल, डॉक्टर हैनेमन सर लिखते हैं कि कोई रबर की चीज रखो और उसके ऊपर ठोकने के लिए बोलना है, या कोई ऐसी चीज पे ठोकना है। इन शॉर्ट व्हाट ही वाज टू से, कि जहां पे बॉटल हमने ठोका और ठोकने के बाद में बाउंस प्रेशर उसमें थोड़ा आना चाहिए, सो दैट द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक फोर्स मस्ट बी देयर, मैक्सिमम स्ट्रोक फोर्स मस्ट बी देयर। तो डॉक्टर हैनेमन ने बोले हैं कि स्ट्रोक कितने लगाने हैं उसके बारे में उन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आपको बोलता हूँ। उसके बाद में अभी आपने स्ट्रोक दे दिया, मान लो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं पेशेंट को जनरली 5 या 10 स्ट्रोक बोलता हूँ। शुरू शुरू में मैं करता था 70-80 स्ट्रोक तक मैं जाता था, बट इट वाज नॉट गिविंग रिजल्ट, सो आई हैव कीप इट डाउन टू 5 और 10 स्ट्रोक टू अवॉइड माय कंफ्यूजन कि कौन से पेशेंट को कितना दिया था। कैसे होता है कि इफ वी आर स्टिकिंग लेबल ओवर देयर, तो ये स्ट्रोक के इसमें मेडिसिन लीक होता है, और लीक होने के बाद में लेबल जो होता है वो धुंधला हो जाता है, तो हमें भी पता नहीं होता अगर हम लोगों ने लिख कर नहीं रखा है। तो यू विल टेक इन राइट हैंड, मैं यही बोलता हूँ, राइट हैंड में लेना है और लेफ्ट हैंड पे जोर से आपको 10 बार करना है। ये समझाते वक्त आप पेशेंट को हमेशा ये समझाना कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, लोगों को आपने दिखाना है कि जोर से आपको स्ट्रोक देना है। आप 5 स्ट्रोक भी बोल सकते हो या 10 स्ट्रोक भी दे सकते हो, राइट। अभी हम लोग आ गए यहाँ तक सकशन तक। अभी ये मेडिसिन तैयार है पेशेंट को देने के लिए, आज का जो अपना टॉपिक है, तो पेशेंट को कंज्यूम करना है अभी ये मेडिसिन घर पे जाके। डॉक्टर हैनेमन सर क्या लिखते हैं कि ये जो बॉटल है आपने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है 120 ml का, दिस इज सिंगल डोज। हाँ, दिस इज सिंगल डोज। आप इसको 8 दिन चलाओ तो भी सिंगल डोज है, आप इसको 1 दिन में खत्म करेंगे एक्यूट में तो भी सिंगल डोज है, आप इसको महीने भर में भी खत्म करोगे तो भी ये सिंगल डोज है। दिस इज व्हाट डॉक्टर हैनेमन वांट्स अस टू से, ये सिंगल डोज रहेगा, कि जो भी इसके अंदर है लिक्विड मेडिसिन सॉल्यूशन, ये सिंगल डोज होगा। तो डॉक्टर हैनेमन ने लिखा है कि यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर देना 12 पार्ट्स में। तो कोलकाता में कुछ लोग हैं जो वहाँ पे स्टिकर लगाते हैं और वो रेडी स्टिकर वो तैयार करके लाते हैं, और दे विल मार्क लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने अगर ऐसी बॉटल में दिया तो व्हाट आई विल डू, मैं मेरा मार्कर पेन लेता हूँ, मुझे जितने डोज में डिवाइड करना है पेशेंट को मैं उनको मार्क कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन की कितना रहेगा कितना ml। ये मैंने मार्क कर दिया मान लो यहाँ तक, और पेशेंट को बोला कि आपको रोज इसमें की दवा सुबह लेनी है एक बार। जब भी पेशेंट लेगा तब भी उसने स्ट्रोक देकर ही लेकर ही लेना है।
अभी पेशेंट का लेने का तरीका क्या होगा? पेशेंट को आपने बोलना है कि आपको एक कप में पानी लेना है, राइट? ये कप में मैंने पानी डाल दिया। ये कप में पानी लेने के बाद में जहां तक मैंने मार्क किया, आपने मार्क किया है आपके पेशेंट के लिए, उतना दवा भरा ये ढक्कन के अंदर, और ये हमने डाल दिया यहाँ पे इसके अंदर। फिर हमने एक स्पून लिया, स्पून मैं भी पेन ले रहा हूँ, स्पून लिया और स्पून से हमने इसको स्टर कर लिया जस्ट टू मिक्स। डॉक्टर हैनेमन डजंट मेंशन कितनी बार स्टर करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो मिक्स हो जाए। अभी पहला डोज अगर आपके पास में सेंसिटिव पेशेंट है और सेंसिटिव या वीक पेशेंट है, तो ऐसी केस में आपने ये करना है कि ये जो एक पहला कप बना हुआ है, इसमें से 2 चम्मच दवा आप दूसरे कप में डालोगे, उसको आप स्टर कर लोगे। फिर तीसरा पानी का कप भरेंगे, उसमें सेकंड जो है आपका, उसमें से 2 चम्मच तीसरे में डालेंगे, और तीसरे में से आप 2 चम्मच पेशेंट को, 2 या 1-2 चम्मच आप पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे। पहला, दूसरा और तीसरे में जो भी बचा हुआ सॉल्यूशन था वो डिस्कार्ड करना है। अभी ये हो गया सेंसिटिव पेशेंट के बारे में। अभी आई विल टॉक विथ एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस में आपने करना क्या है, आपने डिजोल्व कर लिया, ये पहला वाला ही है कप, तो इसमें से पेशेंट को मैंने बोला कि 1-2 चम्मच अभी ले ले, उसने ले लिया। अगर मुझे रिपीट करना है 10 मिनट बाद या 30 मिनट्स के बाद में या 1 आवर के बाद में, डॉक्टर हैनेमन सर एडवाइसेस टू रिपीट LM potency आफ्टर 30 मिनट्स, 1 आवर और 2 आवर और 3 आवर्स इन एक्यूट्स, बट इन माय प्रैक्टिस आई रिपीट एवरी 10 मिनट्स। मतलब मिनिमम टाइम का रिपीटेशन मैंने रखा है आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। लेकिन आफ्टर एवरी 10 मिनट जब मैं रिपीट करूंगा, तो मैं अभी ये इसमें से पेशेंट को दे दिया 2 चम्मच, इसको मैं डिस्कार्ड करूंगा, मैं नए से पानी लूंगा। नए से पानी लेने के बाद में मैं इसको फिर से 10 स्ट्रोक दूंगा। 10 स्ट्रोक देने के बाद में जितना क्वांटिटी मार्क किया है उतना मैं इसमें डालूंगा, फिर से उसको स्टर करूंगा, उसमें से 2 चम्मच पेशेंट को दूंगा। मुझे अगर तीसरी बार एक्यूट में रिपीट करना है, आई विल रिपीट द सेम प्रोसीजर। मैं 10 डाउन स्ट्रोक दूंगा, 10 डाउन स्ट्रोक देने के बाद में कप में नया पानी लूंगा, उसमें नए से दवा डालूंगा, उसको स्टर करूंगा, 2 चम्मच पिलाऊंगा। ये हो गया एक्यूट। यहाँ तक क्लियर है? कोई फास्ट नहीं हो रहा है ना? ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं कि क्रॉनिक में कैसे देना है। क्रॉनिक में हैनेमन सर एडवाइस करते हैं हम लोगों को LM potency देने के लिए 1 इन अ डे, 2 इन अ डे और अल्टरनेट डे। ओके, थोड़ा फास्ट है, चलो ठीक है। तो क्रॉनिक के मैं आई विल रिवाइज अगेन इन लास्ट पार्ट। तो डॉक्टर हैनेमन सर एडवाइस करते हैं क्रॉनिक केसेस में 1 इन अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे और अल्टरनेट डे, ऐसे डॉक्टर हैनेमन ने वहां पे लिखा हुआ है। तो अभी आप करेंगे क्या कि 1 इन अ डे देना है, 2 इन अ डे देना है, एवरीथिंग डिपेंड्स कि पेशेंट को जरूरत है या नहीं है। तब अभी जरूरत है या नहीं है वो हम जानेंगे कैसे? इफ पेशेंट इज इम्प्रूविंग without the appearance of new symptoms or without the aggravation of the symptoms of the disease what he was presented with, that is the deciding factor कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्रॉनिक में आपने ये देखना है कि पेशेंट को बीमारी कैसी है और पेशेंट को रिपीटेशन कितना वो हैंडल कर सकता है। दैट इज important thing in chronic cases. You will learn this technique of using LM scale in chronics after your own experience only. I am here putting what Dr. Hanneman said, and I am putting my experiences, how I am using this LM scale. तो ये हो गया chronic के अंदर। अभी आप एक एक करके मुझे सिर्फ एक बात बोलिए, इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है? इसके आगे के सवाल मत पूछना कि दवा मैंने दे दिया उसके बाद पेशेंट ये लेकर आए फिर क्या होगा, उसके बारे में मैं Sir, नेक्स्ट please. सेशन में। हाँ बोलिए। Please repeat chronic case again. ओके Okay, sir. ओके, तो अभी देखिए स्ट्रोक तो देना है क्रॉनिक केस में, मार्क आपको करना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि पूरा बॉटल में जो सॉल्यूशन है आपको कितने डोसेस में इसको डिवाइड करना है। मतलब आप चाहते हो कि 1 हफ्ते में पूरी बॉटल खत्म हो जाए LM0/1 की,
तो आप उसको अकॉर्डिंगली वैसे डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग लगा दीजिए। पहली बात, जब भी पेशेंट लेगा तो उसको 10 डाउन स्ट्रोक दे के लेगा, और जब भी लेगा तो पहले कप से लेगा। मैंने जो आपको थर्ड कप बोला था ना, दैट वाज फॉर LM0/1 फर्स्ट, पहले डोज के लिए से, वो इसलिए कि आपको पेशेंट का सेंसिटिविटी देखना है। इफ यू डोंट नो कि पेशेंट सेंसिटिव है, अभी मुझे एक बात बोलिए कि अपने 3 मायाजम में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, केस टेकिंग के बाद में आपको कौन सा मायाजम का केस रहेगा तो आपको लगेगा कि पेशेंट सेंसिटिव होगा? Soric miasm. Sora, sir. सोरा। Sora. ओके, तो सोरिक अगर आपके पास में केस है तो यू नीड टू बी कॉशियस व्हाइल गिविंग फर्स्ट डोज। तो फर्स्ट डोज आप जब भी देंगे तो आप थर्ड कप से ही देना। आप ऑब्जर्व करना कि पेशेंट अगर टॉलरेट कर रहा है, यू कैन कट डाउन सेकेंड डोज टू सेकेंड कप, देन थर्ड डोज यू कैन कट डाउन टू फर्स्ट कप। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर? अभी रिपीटेशन कैसा करना है क्रॉनिक में? अभी हैनेमन सर लिखते क्या है कि अकॉर्डिंग टू योर केस, अगर आप चाहते हो, हम लोगों को टाइम शॉर्ट करना है ना। 30C में क्या होता था कि हम लोग सिंगल डोज दे देते थे, एंड वी नीड टू वेट फॉर, अगर रेमेडी का एक्शन 40-50 डेज है, 30 डेज है, तो वहां तक वेट करते थे नेक्स्ट पोटेंसी के लिए। तो यहाँ पे वेट नहीं करना है आपको। अगर आपके केस में आपको लग रहा है पेशेंट इज टॉलरेटिंग वेल, देन वी नीड टू रिपीट द मेडिसिन। तो रिपीटेशन कैसे करना है? आप दिन में 1 बार भी दे सकते हो, 2 बार भी दे सकते हो, अल्टरनेट डे भी दे सकते हो, वीकली भी दे सकते हो। सर बोलिए। Hello, sir. Please speak in English, sir. ओके सर। Okay, So sir. what? Thank you, sir. Okay. If this session ends, we will rejoin with the same link and password after 1 minute immediately. Okay. हाँ, sir. Dr. Hanneman told us to give 10 downward strokes every time. Divide your bottle how many doses you want to give your patients. Accordingly, you can mark on the bottle how much quantity the patient should take at one time. So for first dose, you give 10 downward strokes. Take the desired quantity in first cup of water, stir it well, then take 2 teaspoonsful from that cup. Add that 2 teaspoons from that cup to